Good morning, students. Lesson number 14, page number 178. When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate discolored into copper and sulfate, the free copper gets drawn in the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets this on it. But what about the loss of copper from the solution? From the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. Loss of copper from a solution is stored and the process keeping going. This means that copper gets transferred from the electrode to the other. जैसे कि हम सल्फेट है उसमें से कॉपर या फिर है वो क्या होता है, उसमें अलग हो जाता है और फिर जो बैटरी है उसके हमें जो टू वायर है वो इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं और जो नेक्स्ट है वो कॉपर सॉल्यूशन में वो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है और वो कॉपर है वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द अदर वन. बुजो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट. क्या है, बुजो को एक कॉपर की एक प्लेट ली थी. सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 14.7 जो हमने आगे देखी उसमें 14.7 में बाय कनेक्टिंग अ कार्बन rod in place of a copper plate which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on a carbon rod. जैसे कि हमने 14.7 में देखा था वैसे ही. The process is depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Electroplating. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. क्या है वो electric plating? What is electroplating? Plating is the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means electricity is called electroplating. Electroplating is a very useful process. क्या है वो very useful process है. It is widely used industry for coating metal object with a thin layer and a different metal. 14.8 में जैसे में दिखाई दे रहा है वैसे the layer of metal deposit has some desired property which the metal of the object lacks. For example, plating is done on many objects such as a car parts, फिर bath taps, kitchen gas, burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others. Is a shiny appearance. It does not corrode. It rises or scratches. However, a chromium is expensive and it may not economical to make the whole object of chromium. So the object is made from the copper metal and only coating a chromium over it is deposited. Jewelry makers electroplate silver and gold and less expensive metal. These ornaments have a appearance of silver or gold but are much less expensive. यहाँ पे क्या है, जो क्रोमियम है वो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है और उसमें से जो कोई भी सिल्वर या फिर गोल्ड है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए उसमें क्या है वो उससे बनाया नहीं जाता है, लेकिन उसमें से जो ऊपर सिर्फ उसमें से कवर बनाया जाता है. Tin cans used for storing food are made by electroplating tin on it iron. Tin is less reactive than iron. Thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled.
Iron is used to bridge and automobiles to provide strength. However, iron tends corrode in rust. So, the coating of zinc is disposed on from iron in protecting from corrosion and format of rust. क्या है उसमें से जो आयरन है उसमें से जो वो ऊपर लगता है उसमें से उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें वो लगाया जाता है. In the electroplating factories, the disposal and the use conducting solution is major con. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. इलेक्ट्रोपोनिक्स की जो फैक्ट्रीज है उसमें वो निकालने के वो जाता है और उसमें वो उसको में गाइडलाइंस दी जाती है, उसमें वो कहा जाता है. ओके, आई होप आपको लेसन नंबर 14 है वो समझ में आ गया होगा. आपको क्या करना है, लेसन नंबर 14 की है जो आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है. लेसन नंबर 14 लेसन नंबर 14 में जो वर्कबुक में है वो आपको कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.